So, in today's world where it is very difficult to grab the attention of the youth, we have lots of platforms, we have OTT, TV, television तो था ही. तो in today's world, it is like mental peace youth के लिए stable रहना is like quite difficult. तो what are those mantra which you would like to share with our audience for that? हरे कृष्णा. मेरा नाम दिशा है एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट यूथ. वो सारी जनरेशन में है, द एंटायर वर्ल्ड, इवन द यंग स्टूडेंट्स, kids have these issues, adults have these issues, and we need to understand the main reason behind all this, है ना. So why we are going through this roller coaster of mental health, है ना. why we are going through that कि मॉर्निंग में जो है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, then somebody say something and हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हुई, and then what is depression exactly? कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, that is depression ना. Anxiety, what is anxiety? The fear of losing things, that is anxiety ना, कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कुछ, that is mental health. So we need to find out the reason. हम क्या कर रहे हैं ना कि हम दुख का कारण है क्या, सुख की अनवरत खोज. All the time we are seeking pleasure and happiness from outside of this world. मूड अच्छा नहीं है, वेकेशन पे चले जाते हैं, अच्छा खाना मंगा लेते हैं, फ्रेंड से मिल लेते हैं. What we are doing, हम हैप्पीनेस वी आर लुकिंग आउटसाइड, पीस वी आर लुकिंग आउटसाइड, कि ये करेंगे तो पीस हो जाएगा, अच्छा खाएंगे तो पीस, शॉपिंग करके आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा. वी आर नॉट डेल्विंग डाउन कि रीज़न क्या है, क्यों हमें बाहर से किक चाहिए. ऑल द टाइम वी आर सीकिंग किक्स फ्रॉम आउटसाइड. सो the main reason for all our pain and struggles and troubles is we are seeking pleasure outside, we are seeking happiness outside. We are not living in this moment. All the time plans चलते रहते हैं, future past, past में ऐसा हुआ था, future में ऐसा करना है, past में ऐसा हुआ था, future में ऐसा करना है. We are not living in this moment, just wasting our life कि शाम को ये करना है. What now? गुलाब जामुन खा रहे होंगे, आइसक्रीम खानी है. वी आर नॉट enjoying that gulab jamun. We are not living in this moment, and that is the main reason for all the struggles. Mental health की वजह से our physical health is like in the garbage, if we can say, है ना. We are not consciously doing anything. What is dhyana? We all say that meditation करो सब सही हो जाएगा. Dhyana is all about doing everything consciously ना. ध्यान से करो, full attention, be present. That is dhyana. You don't need to do any, go to Himalayas and do tapas. No, you don't need to do everything consciously. Walk consciously. When you wake up, just pray, be thankful to God. That God, thank you for giving this one more day. And then be consciously aware of everything you are doing, and that will help you physically, mentally, financially, in every aspect of your life. It's not about कि हम पूजा भक्ति करेंगे तो we'll disconnect from everything. It's not like that, है ना. What is पूजा भक्ति exactly? Just be grateful for everything you are having. थोड़ी सी ट्रबल होती है, we complain to God कि भगवान तुमने ये कैसे कर दिया, क्यों, why you are so important, and how will you decide that what is good for you and what is not? All the time we are just doing this ना, कि भगवान तुम पूरा ब्रह्मांड तो रचाया हुआ है तुमने, सब कुछ, you are managing all the planets, all the oceans, everything, but you don't know how to maintain this life. तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी लाइफ कैसे तुमको चलानी है. तो we are complaining about this from the morning till the night. We go to temple, do 100 rupees की पूजा, and we go with the list of our demands. Have you noticed that? कि हम ऑल द टाइम मांगते रहते, कंटिन्यूस मांगते रहते हैं, ऑल द टाइम मांगते रहते हैं. और दिया क्या है आपने? यू आर नॉट एबल टू रीड भगवद गीता और रीड एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स विद ऑल योर हार्ट.
है ना, हम पढ़ रहे हैं, हम मंत्रस पढ़ लेते हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद हम उसके साथ बैठते नहीं हैं एंड हम उसका बखान करने लग जाते हैं जा कर के। मैंने ये पढ़ा, ये श्लोक ये कहता है, ये श्लोक ये कहता है। हैव यू सैट विद दैट श्लोक? हैव यू इम्प्लीमेंटेड दैट श्लोक इन योर लाइफ? इम्प्लीमेंटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि हमें भागना नहीं है, अध्यात्म में भागना नहीं, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है। God knows everything. He knows whom you are fooling. You can fool yourself, you can fool around your word, but you can't fool him. He knows everything. He knows everything. So just start living honestly. Start living in your truth, in the moment, with your truth. Be thankful because you haven't born with anything. You are not going to take anything from this world. Be thankful for what you are getting in this life. Moment to moment, be thankful. Even meeting you, I'm very thankful because I'm able to see the God in you as well. I'm very thankful from your way, from this way, I'm able to communicate some words outside the word, which is necessary to listen because nobody has time. We are running out of time. We don't know what is gonna happen in next moment. We have no idea. We need to be grateful. We need to live in this moment. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. It was really very nice interacting with you. And that's all. With video journalist Ridhima Toshu Divakar, AF 24/7 Noida.